So we'll start with in this lecture with macroeconomics. Now for civil service economics option, this is part of your paper number 1, and for Indian economic service it is part of general economics second paper. General economics second paper include theory of employment, output, money and finance. So the macro section, first of all, I will divide this entire macro into broadly into two parts according to the approach. One approach of explaining the economy is the classical approach. And the alternate approach is Keynesian. So initial part will be basically first the difference between classical and the Keynesian approach of explaining the economy. So these are the two different approach. It is not, we are not discussing which one is right or wrong. Both are right, but both are explaining the economy from different point of view, different perspective. One explanation is explaining the economy from the short run angle, other is explaining the economy from the long run angle. Short run perspective and the long run perspective. So these are two different perspectives to explain the economy. First of all, when we study the macroeconomics, we are studying the aggregate economy. So the main question in the economy is what determines the growth. Second question is what causes that output to fluctuate. Why not output always remain steady? Why there are boom and bust? That means why there is a business cycle. Business cycle means when output will increase and when output will decrease. So what causes that output to fluctuate? Other issue that will be discussed in macro is what causes basically the inflation, what causes unemployment. So issue related to unemployment, inflation, all are part of macroeconomics. Now before starting with the content, just go by the question. I will first show the question of optional paper and then for the Indian economic service. So this is for optional advanced macroeconomics. Okay, so last year in 2022 there was a question of discuss the concept of liquidity trap in the liquidity preference model of rate of interest. Then in the demand for money, what are the major differences between transaction approach and the cash balance approach? IES curve is the locus of equilibrium point in the commodity market. What do points above and below the IES curve signify? So you will find some straightforward question also. In सारे question में कोई difficulty नहीं है. In the sense liquidity trap and the policy implication of liquidity trap. ये एक regular question है macroeconomics का जिसका एक well prepared आपके पास answer होगा. You have to basically just reproduce that answer. Similarly, this is very straight question. What is the meaning of IES curve? What does it signify? And points above or points below the IES curve, what is the significance of that? So 3 question was, in fact 4 question was from macro section. 4 question का मतलब हो गया around 15 marks, 20 marks का अगर weightage है, around 70-80 marks का macroeconomics का weightage होता है. In 2021 you find one question, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In fact, 8th इसलिए include कर रहा because I am including in this macro section the money part also. So demand for money argument is included in a macro section like quantity theory of money, transaction theory of money. तो money वाले part को मैंने macro के अंदर include कर रखा है. So one set of question will be this. तो question basically you will find related to the classical approach and the Keynesian approach. Like for example, explain the weakness of the Keynesian speculative demand for money. So related to the Keynesian perspective, there are various arguments given by the Keynes and the follower of Keynes. Similarly, various arguments given by the traditional economists. Collectively, you call them classical economists. So it is a group of economists. So you can see one numerical question was in 2020. Okay, but there was no pattern of asking numerical question in macro section. IAS वाले पेपर के अंदर कोई पैटर्न मैक्रो का न्यूमेरिकल का नहीं होता था बिफोर दिस. सो इन 2020 देयर वाज वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड इन 2019 एज वेल. तो 19 और 20 दोनों ही साल एक एक न्यूमेरिकल आए, बट 20 के बाद से फिर लास्ट 2 ईयर के अंदर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा. बट ऑब्वियसली सिंस एक बार भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया है तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू कवर इट.
So we'll cover all the numerical aspect in the macro section related to crowding out, related to liquidity trap, related to in calculating the equivalent level of income, rate of interest and so on. कुछ क्वेश्चन यहाँ पे याद रखेंगे, कुछ रेगुलर क्वेश्चन होते हैं और कुछ अप्लाइड क्वेश्चन होंगे. अप्लाइड क्वेश्चन का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल रीड दिस क्वेश्चन नंबर 29. इन द सिंपल केनेशियन मॉडल, इफ इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन आर बोथ फंक्शन ऑफ इनकम, हाउ वुड द मल्टीप्लायर बी अफेक्टेड. ना अगर किसी ने भी ग्रेजुएशन लेवल पे मल्टीप्लायर का टॉपिक कर रखा है या नहीं भी कर रखा है, तो ऑब्वियसली जब आप कंटेंट पढ़ते हैं इसमें, इन एवरी बुक इट इज स्टेटेड दैट कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, और इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस मान करके मल्टीप्लायर एक्सप्लेन किया गया है. क्वेश्चन कह रहा है इफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब दोनों इनकम के फंक्शन है, तो उससे मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे अफेक्ट हो जाती है. मतलब कंजम्पशन का इक्वेशन तो एज अ फंक्शन ऑफ इनकम है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस अ फंक्शन ऑफ इनकम, बट जनरली हम इन्वेस्टमेंट के फंक्शन को क्या लेते थे, ओनली ऑटोनोमस. बट क्वेश्चन सेज इट इज अ फंक्शन ऑफ income. So if consumption and investment both are function of income, then how multiplier will get affected. So you can say this is basically an application based question. What is interest rate targeting? Explain using the concept of Taylor's rule. So this is basically all about the design of monetary policy. तो monetary policy के design में 3 prominent objective होते हैं, like money growth targeting, inflation targeting, interest rate targeting. मतलब what RBI should aim for. RBI should aim for targeting money growth rate, or whether it should aim for targeting inflation rate, or whether it should aim for targeting a rate of interest. ये 3 अलग अलग आर्गुमेंट होते हैं. तो जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे वो क्लासिकल और केनेशियन से रिलेटेड मिलेंगे. लाइक शो हाउ फुल एम्प्लॉयमेंट इज द लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल. तो आज की क्लास के अंदर बेसिकली यू विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन. How full employment is the logical conclusion of classical macroeconomics model. That means in the classical model, when we explain the equilibrium, output will always be determined at full employment. मतलब full employment हमेशा guaranteed है. There is no question of unemployment in the classical model. So how that full employment is guaranteed, or it is the logical conclusion in the model. और वैसे क्वेश्चन अगर आप इकोनॉमिक सर्विस वाले सेक्शन के अंदर देखें, तो ये इकोनॉमिक सर्विस वाला मैक्रो का क्वेश्चन, ठीक है, टॉपिक वाइज आपको पोर्टल पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके प्रेफरेबली दोनों क्वेश्चन, मतलब वेदर यू आर अपेयरिंग फॉर इकोनॉमिक सर्विस और वेदर यू आर टेकिंग ऑप्शनल, दोनों ही केस में आपके पास पूरा क्वेश्चन दोनों ही होने चाहिए. ठीक है, जैसे विच पॉलिसी विल बी इफेक्टिव इफ IAS कर्व इज वर्टिकल. अब अगर IAS कर्व के स्लोप का कंसेप्ट क्लियर है कि कब वर्टिकल होता है कब हॉरिजॉन्टल होता है, तो उस कंडीशन में आप पॉलिसी इंप्लीकेशन इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन तो दोनों ही तरफ होंगे क्वेश्चन. डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ डायकॉटमी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ मनी इन द लाइट ऑफ क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड केनेशियन मॉडल. न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल डायकॉटमी, वो आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा. व्हाट इज क्लासिकल डायकॉटमी एंड व्हाट इज मॉनेटरी न्यूट्रलिटी. सो एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासिकल अप्रोच, इन द न्यू क्लासिकल अप्रोच एंड इन द Keynesian approach. Why is saving in Keynesian system a function of disposable income, but in classical system it is a function of rate of interest? And again the concept of dichotomy and neutrality are so important in the classical theory of. तो अगर आप क्वेश्चन को डिटेल में देखो, you will find that there are a lot of question repeatedly asked. मतलब वही क्वेश्चन बार बार थोड़ा सा वर्ड चेंज करके वो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं. So if you just practice all past year question, तो out of that question paper के अंदर more than 50% question you will be getting from the previous year. More than 50% question previous year का मतलब है कि उन सारे क्वेश्चन का आपके पास एक रिटन आंसर अवेलेबल है, वो आपने प्रैक्टिस कर रखा है, लर्न कर रखा है, लिख रखा है. You are expected only to just reproduce that answer. ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 this. तो इट इज़ नॉट, इकोनॉमिक सर्विस के अंदर भी एक ये नहीं कि एवरी ईयर यू विल बी गेटिंग ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यहाँ भी ऑन ऑफ क्वेश्चन आता रहता है न्यूमेरिकल का. बट अगर आता है तो रिमेंबर ये 15 मार्क्स का हो या 20 मार्क्स का, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज ऑल न्यूमेरिकल आर रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ IAS कर्व,
concept of LM curve, calculating equilibrium income, calculating rate of interest या calculating crowding out and so on. ठीक है, तो पूल ऑफ क्वेश्चन बेसिकली आप ये दोनों ही रखोगे, ये दोनों ही आपके पास अवेलेबल होगा, हार्डली कोई कंटेंट का गैप है इन अप्रोच में. सो नाउ कैन स्टार्ट विद दिस रिटन पार्ट. नाउ जस्ट मेक अ टेबुलर फॉर्म में भी रख सकते हो जैसा अप्रोच क्लियर रखे. तो इनिशियल 10-15 minutes I am just going to explain the difference in approach between classical and the Keynesian. First thing is that when we explain classical economists basically a group of economists. We are referring to those economists before you can say Great Depression of 1929. उससे पहले की जो economists थी, we are referring to that period. तो time period भी ऐसे क्लियर रखोगे. You are referring to that economics. Great Depression से पहले की जो economics है, those traditional economists collectively followed some set of principle. That set of principle is basically the core of classical model. So what are the core principle of classical model? Obviously there will be some drawback of this classical model which has been pointed out by Keynes. So Keynes provided another set of arguments, another set of principle, and their follower are known as Keynesian. Then subsequently the old classical economists defended themselves by modifying their own argument. Like it is basically an ongoing debate. Classical provided a theory, it was countered by Keynes. जब Keynes ने काउंटर किया तो क्लासिकल ने अपने कंसेप्ट को मॉडिफाई कर लिया. तो जब क्लासिकल ने मॉडिफाई किया तो जिन्होंने मॉडिफाई किया क्लासिकल आर्गुमेंट को, दे आर नोन एज नियो क्लासिकल और पोस्ट क्लासिकल. When classical modified, later on the recent economists also modified the Keynesian. They will be known as neo-Keynesian or post-Keynesian. So the debate is basically still going on. We are not judging here which one is correct or incorrect. But question अगर आता है classical model पे, then we have to explain that model as given by the classical economist without making any value judgment कि whether it is correct or incorrect. Similarly, when we are explaining the Keynesian model, you have to explain the Keynesian model as provided by the Keynesian argument. So in the classical and Keynesian argument, the most important one is whenever you refer the classical concept, classical belief is that economy is always characterized by full employment. Economy is always characterized by full employment. You can just write brief points. According to the classical, economy is always characterized by full employment. And when you say full employment, it means what? Full employment does not mean that everyone is employed. Full employment only means that at the current market wage rate, demand for labor is equal to supply of labor. That means when I say labor demand and labor supply, लेबर को एन से डिनोट कर रहा हूँ बस, लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड, देयर इक्वालिटी डिटरमाइन द वेज. दैट मीन्स एट द करंट मार्केट वेज रेट, डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर. इन दैट सेंस देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट. बट हाउ फुल एम्प्लॉयमेंट इज गारंटीड? Full employment is guaranteed in the classical model due to second feature, full flexibility of wage. Full flexibility of wage. Full flexibility of wage. क्लासिकल मॉडल में वेज की फ्लेक्सिबिलिटी है. एंड वेज फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स, wage flexibility simply means that if labor demand is more than labor supply, if labor demand is more than labor supply, then wage in the market will increase. If demand for labor is more, wages will rise. And if demand for labor is less, supply of labor is more, and wages will
fall, and wage will fall immediately so that labor demand becomes equal to labor supply. So according to the classical model, there is full employment, and full employment is ensured and guaranteed due to flexibility of wage. It is guaranteed due to flexibility of wage. Wages will adjust immediately. But contrary to the classical model, Keynes argued that economy is characterized by unemployment. Economy is characterized by unemployment. So full employment is not always be the case. Classical Keynesian model कह रहा है कि full employment is not always be the case. It is not a normal condition. Unemployment is generally prevailing, and unemployment prevail because unemployment, obviously अगर unemployment है इसका मतलब है करंट मार्केट वेज रेट पे लेबर का डिमांड कम है और लेबर का सप्लाई ज़्यादा है. सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर एंड डिमांड फॉर लेबर इज लेस. ओनली देन वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट. बट व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल्स इन द Keynesian model? It prevails in the Keynesian model because Keynes believed that wages are rigid. So wage rigidity is an important part. Wage rigidity is an important part of the Keynesian model. But why wages are rigid in the Keynesian model? Keynes का ये कहना है कि even when labor supply is more and demand is less, wages cannot fall because there are certain reasons for it. There is a government minimum wage law. तो गवर्नमेंट का अगर मिनिमम वेज लॉ है तो ऑब्वियसली वेजेस कैनॉट फॉल बिलो दैट. देयर इज अ एफिशिएंसी वेज थ्योरी. प्रेजेंस ऑफ लेबर यूनियन will not allow wages to fall even if some labor remain unemployed. So unemployment is there because of rigidity of wage. तो रिमेंबर, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर वेज की रिजिडिटी होगी तो उसमें आउटकम क्या आएगा, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी लेंगे तो आउटकम क्या आएगा. बट फ्लेक्सिबिलिटी इज फीचर ऑफ क्लासिकल मॉडल, रिजिडिटी इज फीचर ऑफ Keynesian मॉडल. अब एक क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए, इट विल बिकम क्लियर व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट. Just read this question number 37. क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट एंड रियल वेज वुड चेंज इन अ टिपिकल क्लासिकल मॉडल. क्वेश्चन रेफर्स टू द क्लासिकल मॉडल. इन द इवेंट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ लेबर आफ्टर कॉमा मनी वेज बिकम्स रिजिड. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चन वाज रेफरिंग टू विच मॉडल, बट असम्पशन क्या लिया, मतलब क्वेश्चन ने मॉडल आपको कहा है क्लासिकल के थ्रू एक्सप्लेन करना. दैट मीन्स यू विल यूज द टूल ऑफ क्लासिकल मॉडल बट फॉलो द असम्पशन ऑफ Keynesian. सो व्हाट विल बी द आउटकम. क्लासिकल मॉडल के अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा क्योंकि हमने असम्पशन किसका फॉलो कर लिया, केन्स का असम्पशन फॉलो किया. तो if you follow the Keynesian assumption, the outcome will be similar to the Keynesian assumption, Keynesian model, no matter which model or which tool you are using. So if there will be rigidity of wage, unemployment will result. If there is flexibility of wage, there will be no unemployment. तो आपको क्वेश्चन जब आप आंसर करोगे then you have to relate that assumption. So be clear when you explain the differences between classical and the Keynesian. So first important and major difference between classical and Keynesian is all about the full employment and unemployment. Full employment or unemployment के लिए. Another difference point number 3. Classical model के accordingly output is determined from supply side. Just write down that statement. Output is determined from supply side. Output is determined from supply side.
Output is determined from supply side means in the classical model when you draw the aggregate supply curve it will be vertical, और सप्लाई का जब ड्रॉ करेंगे ऑब्वियसली विल डिराइव दिस, आज पहले क्लास के अंदर ये डिराइव होगा भी. यू एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट, वाई इज डिपेंडिंग आउटपुट. तो aggregate supply curve is basically vertical in the classical model and it is vertical at which level of output? Full employment level of output. You can write y star or yn. It does not matter whether you draw aggregate demand above or below. Independent of that aggregate demand, output fix है ना. अगर हमने aggregate demand का पोजीशन यहाँ पे रखा है तो भी output वही रहेगा. If you draw aggregate demand above, even then output will remain same. So you are saying that output is determined from supply side. Output is determined from the supply side. So what is the role of demand side then? In the classical model, if output is determined from the supply side, then what is the role of demand? The role of demand is only to determine price. अगर aggregate demand का position यहाँ पे है तो price will be P1. If aggregate demand is position here, then price will be P2 and so on. So role of AD in classical model is to determine price and role of AS is to determine output. Clear? Classical model में output is determined from supply side, price is determined from demand side. ठीक है, जो भी कह रहा हूँ उसको मैं फिक्स कर लीजिएगा. But I am referring every word for the classical model. I am not referring to the neoclassical model. Right now you are studying which model? ओल्ड ट्रेडिशनल क्लासिकल मॉडल की बात हो रही है, जो ऑर्थोडॉक्स क्लासिकल है उसकी बात हो रही है. विल कवर द न्यू क्लासिकल, उन्होंने क्या मॉडिफाई किया, दैट विल बी कमिंग लेटर ऑन. बट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट वाज द क्लासिकल बिलीफ. सो क्लासिकल मॉडल के अंदर आउटपुट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द सप्लाई साइड, प्राइस इज डिटरमाइंड फ्रॉम द डिमांड साइड. इन द केनेशियन मॉडल आउटपुट इज डिटरमाइंड फ्रॉम डिमांड साइड. Output is determined from demand side. Output is determined from demand side. Output is determined from demand side in the sense in the Keynesian model you will find aggregate supply line horizontal and the position of aggregate demand. This will determine output. जो भी ड्रॉ किए जा रहे हैं सारे भी एक्सप्लेन होंगे. White is horizontal, white is negatively sloped and so on. So when aggregate demand will increase, what will be the effect? When aggregate demand will increase, आउटपुट विल इंक्रीज. बट ध्यान देना यहाँ पे जो आउटपुट मार्क कर रहे हैं, दिस आउटपुट इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है बिकॉज केनेशियन मॉडल के अकॉर्डिंगली इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज बाई अनएम्प्लॉयमेंट. सो इकोनॉमी इज नॉट कैरेक्टराइज बाय द फुल एम्प्लॉयमेंट. सो आउटपुट इज लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. और ये डिवीजन एक्चुअल मिस्टेक होता है बिकॉज व्हेन वी एक्सप्लेन द क्लासिकल मॉडल, इन द क्लासिकल मॉडल यू विल राइट प्रोडक्शन फंक्शन एज, प्रोडक्शन मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर. प्रोडक्शन का फंक्शन क्लासिकल मॉडल में लिखा जाएगा इस फॉर्म में. और इन द केनेशियन मॉडल यू विल राइट दैट y इज अ फंक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड. एंड रिमेंबर बोथ आर करेक्ट. So sometimes in the macroeconomics you will write y as a function of capital and employment of labor. You can also write y is equal to AD. And when you say y is equal to AD, aggregate demand in economy means demand could be made by household for consumption. It could be made by firms for investment. It could be made by government for both the purpose. It could be made by the foreigners also. तो aggregate demand के component usually क्या होते हैं? Consumption, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ओपन इकोनॉमी में नेट एक्सपोर्ट. तो y इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड एंड बोथ आर बेसिकली करेक्ट. ये दोनों ही अप्रोच सही है बिकॉज
if for example suppose if I say y GD, remember जहाँ कहीं भी हमने y लिखा है यहाँ पे मैक्रो में, that term stands for GDP, ये GDP को रिप्रेजेंट कर इकोनॉमी का. तो if I ask why GDP in India in 2022-23 is more as compared to 1951-52, 1951-52 के कंपेरिजन में आज की डेट में इंडिया का GDP ज़्यादा है. बट वाई इट इज़ मोर? Why we are able to produce more output? You can say we are able to produce more of output because over a period of time there is more and more plant and machinery available, more labor is there, technology has improved and so on. So those will be the points we will highlight. Now if I say that in the why GDP growth rate of 2022-23 is less as compared to growth rate of 2021-22, तो अगर करंट ईयर का जीडीपी ग्रोथ रेट लास्ट ईयर के जीडीपी ग्रोथ रेट से कम है तो व्हाट कुड बी द रीजन? द रीजन कुड बी स्लो डिमांड. इफ देयर इज लैक ऑफ डिमांड, इफ देयर इज लेस डिमांड, देयर विल बी लेस प्रोडक्शन. इफ देयर विल बी लेस प्रोडक्शन, देयर विल बी लेस स्लो ग्रोथ. तो जब आप करंट ईयर के जीडीपी को पास्ट ईयर के जीडीपी से कंपेयर करेंगे तो हमारे लिए डिमांड साइड इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. और जब मैं करंट ईयर के जीडीपी को 1951 के जीडीपी से कंपेयर कर रहा हूँ देन इट इज अ लॉन्ग रन व्यू. तो क्लासिकल कंसेप्ट इज लॉन्ग रन व्यू एंड केनीशियन कंसेप्ट इज शॉर्ट रन. तो बोथ पर्सपेक्टिव, दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपको इकोनॉमी समझ में आनी चाहिए, लॉन्ग रन एज वेल एज शॉर्ट रन. तो फर्दर डिफरेंस कंटिन्यू रखना चाहिए. पॉइंट नंबर 5, classical economics. Classical economics is supply side economics. Classical economics is supply side economics. Is supply side economics, and it is long run description of an economy. And it is long run description of an economy. Classical economics is supply side economics. And it is long run description of an economy. Long run description of an economy. Underline that, long run description. Right side. Keynesian economics. Keynesian economics is demand side economics. Is demand side economics. And it is short run description of an economy. Short run description of an economy. Short run description of an economy. So one approach is in fact long run approach, other approach is short run approach. One is focusing on the demand side more, other is focusing on the supply side. Further difference between classical and Keynesian, because entire macro के अंदर आपको हर जगह ये रेफर करना है. Classical model is also based on the concept that supply creates its own demand. Supply creates its own demand. And is once a good has been supplied, demand will be generated automatically. There is no problem from the demand side in the classical model. So one obvious question is how supply of a commodity will generate demand for that commodity. You can take any this popularly known as Say's law. So Say's law is basically saying that supply creates its own demand. Now if we supply any commodity, just कोई particular example ले लिया, suppose a particular product good X has been supplied, तो पहला क्वेश्चन आता है कि if that good X has been supplied, it means it must be produced first of all. But how we can produce a commodity?
For production of any commodity, you require factors of production. Factors of production like labor, land, capital, entrepreneur, and so on. To those factors of production, you will make the factor payment. That means production generates income for factor payment. Production generates income for the factor payment in terms of wages, in terms of rent, in terms of interest, and so on. And what is the use of that income to the factor of production? The use of that money for the factor of production is to spend it. But they will spend it on what? Spend it only on the commodity that has been produced. तो अगर किसी गुड का प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम, इनकम क्रिएट्स एक्सपेंडिचर, so demand for that good is automatically generated. There is no problem from the demand side. I repeat, whenever we produce a commodity, it requires various factors of production. In the classical model, obviously you are making factor payment to those factor services that generates income, and that income will be spent in the classical model. Because classical thought ये भी है कि money has only one role to play, and that is to act as medium of exchange. Classical model ने कहा कि money का एक important काम है, and the sole purpose of money is to act as medium of exchange. We keep money only for transaction purpose. That means money is being used only for the transaction purpose. That means to buy goods and services. So when you get a money, you spend that money on purchase of that commodity. So if you supply a commodity, demand for that commodity is automatically generated. But if that is correct, that supply creates its own demand, how we can explain Great Depression? Recession में या depression में क्या होता है? Is it a problem of lack of production or lack of demand? Production तो available है, lack of demand है. Production तो हो रखा है, but there is no less demand. So if there is less demand, it means this concept is not correct then. क्योंकि ये concept क्या कह रहा है? Supply creates its own. तो अगर if supply creates its own demand, if that is correct, तो economy में कभी depression आना ही नहीं चाहिए था. That means the classical model failed to explain Great Depression. उस Great Depression को फिर केन्स ने explain किया actually what is happening, and therefore onwards it is Keynesian model. उसके बाद के जो economics फिर केन्स का उसके follower हो गए वो Keynesian model हो गया. तो Keynesian model in fact you can say after Great Depression है. उससे पहले only it was used to be only a classical model. तो the Keynesian argument is that supply does not create always its own demand. Supply does not create its own demand. Supply does not create its own demand. Supply does not create its own demand. और ये डिफरेंस एक्चुअल में क्लासिकल और केनेशियन के बीच इसलिए आता है बिकॉज क्लासिकल थॉट में money demand, money has only one function to play, and that is to act as medium of exchange. Classical concept में demand for money has only one part, and that is transaction demand for money. We keep money because money helps us to buy goods and services. There is no other purpose of keeping money. If you have money, you are holding that money only because it helps you to buy goods and services. But Keynes provided another description. Keynes provided another description in the sense, in the Keynesian approach, money performs the role of medium of exchange as well as the role of store of value. Money perform medium of exchange as well as the role of store of value. Remember classical Keynes ने क्लासिकल को रिजेक्ट नहीं किया. वो ये नहीं कह रहा है कि ये रोल नहीं होता, ये रोल तो है, but this is not the only role. The other role is to keep money because money also acts as store of value. Why we keep money in fixed deposit? फिक्स डिपॉजिट के अंदर जो मनी रखा हुआ है, इट इज नॉट एक्टिंग एज मीडियम ऑफ
करंट अकाउंट में जो मनी है वो तो मीडियम अफेक्शन का काम कर रहा है, हम डे टू डे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बट वाई यू आर कीपिंग इन फिक्स डिपॉजिट? बिकॉज इन फिक्स डिपॉजिट मनी इज परफॉर्मिंग द रोल ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी के टर्म में हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं? स्टोर करते हैं। मनी के टर्म में वैल्यू को स्टोरेज फंक्शन इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ मनी, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिमांड फॉर मनी इन द केनीशियन मॉडल will be for two purpose. One purpose is transaction and the other purpose which is exclusively provided by Keynesian is the speculative purpose of keeping money. We keep money for speculative purpose, and what we are speculating, what we are anticipating, जो speculative function है वो basically relate होता है with terms of demand for bond. मतलब if you have some money, money कहने का मतलब क्या, इनकम है या वेल्थ है, तो वेल्थ का एक पार्ट हमने कैश के फॉर्म में रखा बिकॉज डे टू डे लाइफ में मुझे गुड्स और सर्विसेज बाई करनी, सो दैट पार्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी विल बी कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी। बट वाई यू कीप अदर पार्ट? वहाँ ट्रांजेक्शन के लिए नहीं है, वो ट्रांजेक्शन के लिए नहीं है, वो स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए है। तो आर्गुमेंट क्लासिकल का ये कहना था कि हमारे पास जो भी वेल्थ होगा उसका एक पार्ट हम कैश अपने पास रखेंगे मनी के फॉर्म में, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी इसके अलावा मनी होगा, एक्स्ट्रा मनी होगा, उन सारे मनी से हम बॉन्ड बाई कर लेंगे, बिकॉज बॉन्ड का बेनिफिट क्या है? बॉन्ड से मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा, और अगर मैंने 100 रुपीज़ कैश रखा हुआ है तो उससे कोई रिटर्न, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बाई बॉन्ड विथ दैट सरप्लस कैश जो इन एक्सेस ऑफ ट्रांजेक्शन है। केन्स कहता है इन सम सिचुएशन इट इज़ बेटर नॉट टू कीप बॉन्ड but to keep cash in some situation. वो situation यहाँ पे एक्सप्लेन किए जाएंगे। When it is better not to keep interest earning bond but to keep idle cash, हम कैश को अपने पास रखना प्रेफर करेंगे rather than keeping in the form of bond. You can just relate it with suppose if a person has some wealth है तो उसने अपने पास ट्रांजेक्शन के लिए कैश रखा और रिमेनिंग अमाउंट से उसने शेयर बाई कर लिया लेटर से। बट अगर वो पर्सन ये एंटिसिपेट कर रहा है कि कमिंग डेज में शेयर का प्राइस कम होने वाला है, तो व्हाट विल बी द बिहेवियर? शेयर को सेल करके वो क्या करेगा? कैश बैलेंस अपने पास रखेगा। बट कैश क्या उसने इसलिए लिखा, शेयर को उसने कैश में इसलिए कन्वर्ट किया है सो दैट ही कैन बाई सम गुड्स एंड सर्विसेज? नो, द आंसर इज नो। ही इज जस्ट एंटिसिपेटिंग दैट इन फ्यूचर देयर कुड बी कैपिटल लॉस इफ दैट पर्सन कंटिन्यू टू कीप ऑन होल्डिंग दी शेयर। तो वही आर्गुमेंट बॉन्ड के साथ है। इन सम सिचुएशन इट इज बेटर नॉट टू कीप बॉन्ड बट टू कीप कैश, एंड दैट पर्पस ऑफ होल्डिंग कैश विल बी कॉल्ड एज speculative demand for money. We are speculating about something, speculative demand for money, and that speculative demand for money is the reason behind the recession. रिसेशन के कंडीशन में सप्लाई तो अवेलेबल है बट डिमांड नहीं है, बिकॉज हमारे पास कैश अवेलेबल है। अगर प्रोडक्शन हुआ है तो इनकम तो जनरेट हुई थी, बट हमने उस इनकम को स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए क्या कर लिया? होल्ड कर लिया। यू कैन रिलेट विद द करंट कोविड-19 पैंडेमिक से भी रिलेट कर सकते हो। वाई देयर वाज लो डिमांड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? बिकॉज पीपल वर एप्रीहेंसिव अबाउट फ्यूचर। जिनके पास जो भी कैश अवेलेबल था उन्होंने उसको खर्च नहीं किया। खर्च नहीं करने का मतलब क्या? दे आर होल्डिंग दैट कैश। इफ यू आर होल्डिंग द कैश it means lack of demand. If there will be less demand, there will be less production, and if there will be less production, there will be slow economic growth. So that was basically the speculative purpose of keeping cash. तो आप उसको बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बेसिकली रिलेट करके एक्सप्लेन करेंगे। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो जब आप मनी वाले सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे भी याद रखिएगा ये दो आर्गूमेंट आएंगे, ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। So in the classical model, money is demanded for transaction. In this Keynesian, money demanded for transaction as well as for speculation. दोनों ही पर्पस के लिए होता है। In classical, money perform the role of medium of exchange. In the Keynesian, money perform the role of medium of exchange plus store of value. तो जैसे एक बार पॉइंट को जरा रिकैप कर लीजिए। Whenever I say classical model, तो अगर क्लासिकल मॉडल मैंने कहा तो जितने पॉइंट्स मैंने लिखे वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए।
Classical model means economy is characterized by full employment due to flexibility of wage. ये की वर्ड है जो आंसर में पहले पैराग्राफ के अंदर होनी चाहिए. कोई भी आंसर आप क्लासिकल मॉडल का कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय फुल एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज. आउटपुट डिटरमाइन फ्रॉम सप्लाई साइड. व्हाट इज द रोल ऑफ डिमांड? टू डिटरमाइन प्राइस. मनी परफॉर्म द रोल ऑफ medium of exchange and money is held only for transaction purpose. Whereas in the Keynesian model, unemployment is a normal course of action in the economy. Unemployment exists because of flexible wage rigidity. Output is determined from the demand side and supply is basically determining that price. Y equal to AD आप Keynesian में लिखोगे. Keynesian model is basically shortened description of economy. It is demand side economics. Keynesian model is the demand side economics. Further जो point of differences आप classical और Keynesian के बीच करते हैं उसमें one important part in the classical section is that it talks about classical dichotomy. It talks about classical dichotomy. Entire classical concept is based upon classical dichotomy. Dichotomy का मतलब होता है separation. And separation between nominal variable and real variable. So according to the classical economists, there is a separation between nominal variable and real variable. तो मैक्रो के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं, out of those variables some are nominal, some are real. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से नॉमिनल वेज, रियल वेज. सो नॉमिनल वेज SW. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सपोज वर्कर को अगर वेज दिया जाता है, वेज इज ₹100 पर डे या पर आवर, जिस फॉर्म में वेज को. दिस नॉमिनल इज बेसिकली इन मॉनेटरी टर्म, सो दिस कॉल्ड एज द नॉमिनल वेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल वेज? Real wage means what is the purchasing power of this 100 rupees? How much goods worker can buy with that 100 rupees? It depends upon what? वो प्राइस का फंक्शन हो जाएगा. अगर मैं ये कहता हूँ कि मार्केट में प्राइस का इंडेक्स, प्राइस भी 100 रुपीज़ है फॉर 1 यूनिट, तो इन 100 रुपीज़ यू कैन बाई. इफ प्राइसेस आर 50 देन 2 यूनिट यू कैन बाई. इफ प्राइसेस आर 200 देन हाफ यूनिट यू कैन बाई. तो जब हम फिजिकल टर्म में उसको एक्सप्लेन करेंगे, वेज डिवाइडेड बाय प्राइस कर देंगे, तो वेज अपॉन प्राइस अगर करेंगे देन इट विल बी कॉल्ड एज रियल वेज. W इज कॉल्ड नॉमिनल वेज. WYP इज मतलब किसी भी नॉमिनल को अगर आप प्राइस से डिवाइड कर दो देन इट विल बिकम रियल. सो वी हैव नॉमिनल वेज, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट. सिमिलरली वी हैव रियल वेज, रियल मनी सप्लाई, रियल एक्सचेंज रेट. और क्लासिकल कंसेप्ट कहता है कि रियल और नॉमिनल आर सेपरेटेड. दैट मीन्स इफ देयर विल बी चेंज इन एनी नॉमिनल, it will affect other nominal but it will not affect any real. Change in nominal will affect nominal, change in real will affect real, but change in nominal will not affect real. Real और nominal separated. इकोनॉमी में रियल और नॉमिनल सेपरेटेड है एंड दैट इज द आइडिया ऑफ क्लासिकल डायकॉटमी. वो अभी पहले क्लास के अंदर भी प्रूव भी हो जाएगा, एक्सप्लेन भी कर लेंगे. नॉमिनल एंड रियल आर सेपरेटेड. चेंज इन द नॉमिनल विल नॉट अफेक्ट एनी रियल. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई एक नॉमिनल वेरिएबल है. एनी नॉमिनल विल ऑलवेज बी इन मॉनेटरी टर्म and any real will always be in physical term. I repeat, nominal किस टर्म में होना है? मॉनेटरी टर्म में होगा और रियल फिजिकल टर्म में. व्हाट डज इट मीन? वर्कर को वेज मिला, किस टर्म में मिला वेज? मॉनेटरी टर्म में मिला, वो उसका नॉमिनल वेज है. हाउ मच गुड्स ही कैन बाय विद दैट वेज इज फिजिकल, दैट इज द रियल.
So this pen is real. Price of this pen is nominal. इसका जो price होगा वो nominal है. So price could be 10 rupees, price could be 1000 rupees. So suppose I say I am keeping that much cash which enable me to buy this pen. So how much is my demand for money? I repeat my question. I am keeping that much cash which enable me to buy this pen. अब आप कहोगे सर बट मैं इसको मॉनेटरी टर्म में अगर पूछूं तो आप कहोगे विदाउट प्राइस वी कांट से, बिकॉज प्राइस तो 10 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है. तो इफ प्राइस इज 10 रुपीज आई एम होल्डिंग हाउ मच कैश? 10 रुपीज. इफ प्राइस इज 20 देन आई एम कीपिंग नाउ 20 रुपीज. तो एक बार आपने कहा 10 रुपीज रखा है, अगली बार कह रहे हो 20 रुपीज रख रहे हैं. वो जो चेंज हो रहा है वो नॉमिनल चेंज हो रहा है, रियल चेंज नहीं हुआ. रियल तो एक पेनी है. तो जो रियल अमाउंट है वो हमेशा किसके टर्म में होगा? फिजिकल टर्म में होगा. और जो नॉमिनल है वो मनी के टर्म में होता है. जो रियल है वो फिजिकल टर्म में होता है. जैसे आप कहते हो रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी. व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी एंड व्हाट इज रियल जीडीपी? Real GDP will be in terms of the physical quantity of the production, and nominal will be monetary part, price multiplied by that quantity. So there are many concepts in economics, in macro particularly. Out of that, some are nominal, some are real. But classical say that change in nominal will not affect real. It will affect other nominal. एक nominal दूसरे nominal को affect करेगा, बट नॉमिनल रियल को अफेक्ट नहीं करता. नॉमिनल रियल को अफेक्ट नहीं करता. तो ये आइडिया बेसिकली क्लासिकल डायकोटमी का क्लासिकल मॉडल के अंदर हो. सच क्लासिकल डायकोटमी डज नॉट एग्जिस्ट इन द केनेशियन मॉडल. केनेशियन मॉडल में चेंज इन नॉमिनल विल अफेक्ट रियल ऑल्सो. सो दैट डायकोटमी डज नॉट एग्जिस्ट इन केनेशियन मॉडल. Classical dichotomy does not exist in the Keynesian model. Classical dichotomy does not exist in the Keynesian model. Classical dichotomy does not exist in Keynesian model means what? In that in the Keynesian model, classical dichotomy exist नहीं कर रही है. It means change in nominal can affect a real. यहाँ पे रियल और नॉमिनल सेपरेटेड नहीं है. मतलब इफ सपोज यू चेंज मनी, तो इफ यू चेंज मनी सप्लाई, तो मनी इज अ नॉमिनल वेरिएबल बट मनी विल अफेक्ट रियल. वहाँ पे रियल अफेक्टेड हो जाएगा केनेशियन में. क्लासिकल में रियल विल नॉट बी अफेक्टेड. सो वी हैव टू एक्सप्लेन दैट मॉडल इन टोटलिटी. आपको ये मॉडल एक्सप्लेन करना कंप्लीटली. तो टाइम फ्रेम क्लियर रखिएगा. क्लासिकल मॉडल में क्लासिकल न्यूट्रलिटी, क्लासिकल डायकोटमी और मॉनेटरी न्यूट्रलिटी की बात हो रही है. मॉनेटरी न्यूट्रलिटी का मतलब होता है, अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड इज हियर मॉनेटरी न्यूट्रलिटी. क्लासिकल इज बेस्ड अपॉन मॉनेटरी न्यूट्रलिटी. एंड मॉनेटरी न्यूट्रलिटी मीन्स जब हम कहते हैं मनी न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है? मनी न्यूट्रल का मतलब होता है कि मनी इटसेल्फ इज अ नॉमिनल वेरिएबल. मनी एक नॉमिनल वेरिएबल है. सो इफ देयर विल बी चेंज इन मनी देन व्हाट विल बी द आउटकम इन क्लासिकल मॉडल? वो नॉमिनल वेरिएबल है. तो अगर वो नॉमिनल वेरिएबल है तो नॉमिनल को अफेक्ट करेगा, रियल को अफेक्ट. इन दैट सेंस वो न्यूट्रल है. मनी इकोनॉमी में न्यूट्रल है. इसका मतलब होता है इट विल नॉट अफेक्ट रियल, इट विल नॉट अफेक्ट आउटपुट, इट विल नॉट अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट. It will affect only the nominal terms like nominal wage, nominal interest and so on. Or obviously that monetary neutrality does not exist in Keynesian. That monetary neutrality does not exist in the Keynesian. But again I repeat, entire thing which you have explained in the classical section refers to the orthodox classical economics, not referring to the neoclassical. neoclassical जो होंगे वो broadly classical को follow करेंगे with modification.
विथ मॉडिफिकेशन लाइक का मतलब हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये कर्व ड्रॉ किया, इस कर्व का मतलब हो गया आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू फुल एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज। जो न्यू क्लासिकल कहते हैं उनका ये कहना है कि इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू फुल एम्प्लॉयमेंट बट इन लॉन्ग रन इट विल बी इक्वल टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ये कह रहा है कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट के बराबर है। और जो न्यू क्लासिकल होंगे उनका कहना होगा इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू फुल एम्प्लॉयमेंट। नॉट ऑलवेज इक्वल टू मीन्स इन न्यू क्लासिकल द एग्रीगेट सप्लाई का विल बिकम पॉजिटिवली स्लोप। अब पॉजिटिव स्लोप अगर हमने बना दिया तो इसका एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे y की वैल्यू किसके बराबर है, तो y इक्वल टू वाई एन, नॉट ऑलवेज y इक्वल टू वाई एन इन द लॉन्ग रन बट इट कैन डेविएट फ्रॉम द वाई एन ऑल्सो। बट अगर क्लासिकल कह रहे हैं कि डेविएट हो सकता है, इसका मतलब क्लासिकल एग्री विथ होम केनेशन। तो केन्स ने जब काउंटर किया तो उसको डिफेंड करने के लिए क्लासिकल ने अपने कंसेप्ट को मॉडिफाई कर रखा है। ठीक है, तो दीज आर वेरियस आर्गुमेंट प्रोवाइडेड सेपरेटली। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटायर मैक्रो के अंदर आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, जो भी आर्गुमेंट यहाँ लिख रहे हैं। अब क्लास का फॉर्म ये हो जाएगा कि फर्स्ट आई विल कंप्लीट द क्लासिकल मॉडल, ठीक है, देन यू विल मूव टू केनेशन मॉडल, देन वी कम टू द न्यू क्लासिकल, देन गो टू द न्यू केनेशन एंड देन वी कैन कंप्लीट द सिंथेसिस पार्ट, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिकल एंड केनेशन। ठीक है, तो वो फॉर्म होगा। तो इनिशियल क्लासेस बेसिकली फोकस ऑन ओनली क्लासिकल, सब्सिक्वेंटली इट विल बी द केनेशन। ठीक है, क्लासिकल एक मॉडल, first thing divide it into three part. Classical AS, then classical AD, and third argument will be loanable fund theory. Loanable fund theory of interest. Loanable fund theory of interest. Classical AS, classical AD and loanable fund theory of interest. मतलब जब कभी क्लासिकल मॉडल की बात हो रही है, कंप्लीट मॉडल, देन टू एक्सप्लेन दैट क्लासिकल इक्विलिब्रियम मॉडल वी आर यूजिंग थ्री टूल. वन इज क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व, other will be the classical aggregate demand curve, and third will be the loanable fund theory of rate of interest. So first you will derive classical AS, then we will derive classical AD, and then we explain the loanable fund, then only we can talk about the policy implication in the classical equilibrium model. ठीक है, तो ये अलग अलग पार्ट में बेसिकली एक्सप्लेन हो रहा है. So this classical aggregate supply curve has been explained well in chapter number 3 फ्रॉइन. ठीक है, रेफरेंस आपका इस चैप्टर के लिए रहेगा फ्रॉइन. क्लासिकल मॉडल के लिए प्रेफरेबली चैप्टर 3 एंड 4, दो चैप्टर आप पढ़ोगे फ्रॉइन. मैक्रो वाले स्पायरल में इंक्लूडेड है, यू डोंट नीड टू बाय सेपरेटली दैट बुक.
मैक्रो का जो स्पायरल होगा उसमें इनिशियल चैप्टर 3 से स्टार्ट हो रहा है. चैप्टर 3 इज एक्सप्लेनिंग दिस आर्गुमेंट. देन चैप्टर नंबर 4 इज एक्सप्लेनिंग क्लासिकल एडी एज वेल एज लोनेबल फंड. तो चैप्टर नंबर 4 में इन फ्रॉम फ्रॉन chapter number 4 include basically both classical AD as well as loanable fund theory of rate of interest. So your reference for this initial topic in the classical model is 2 chapter from front, chapter 3 and chapter 4. बट पॉइंट्स वही बनता है कि जब आप कोई क्लासिकल कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, जैसे क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई का वर्टिकल है, तो सिंस ये चैप्टर है तो उस चैप्टर में प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर है पढ़ रहे हो, लेटर से चैप्टर 3 किया, इट विल कंटेन अराउंड लेटर से 20 पेजेस. हमें वहाँ पे आंसर लिखना है, वो आंसर बेसिकली वहाँ 2 पेज के अंदर लिखना है, 2 to 3 मैक्सिमम. बट इन दैट 2 और 3 पेजेस हमारा कंटेंट जो होना चाहिए वो बुक वाले आना चाहिए. बुक में जो लिखा हुआ वही वर्ड सेंटेंस उस 2 पेज के अंदर भी आनी चाहिए. तो योर ऑब्जेक्टिव इन दिस क्लास इज बेसिकली a class will basically help you to explain this concept, explain in 20 page and give you a dictation in class notes, let us say maximum 6 to 7 page. अभी आज की क्लास के अंदर ये चैप्टर विल कवर इट और ये आपके पास रिटर्न हो जाएगा. जब रिटर्न हो जाएगा तो यू आर एक्सपेक्टेड टू लर्न दिस एंड यूज दिस रिटर्न नोट्स इन आंसर. तो बेसिकली जो आंसर आएगा वो आपका फोकस हो जाएगा and that is expected. ठीक है, उसी ऑर्डर में बेसिकली लिखना है. तो ये कंप्लीट प्रोसेस होगा आप किसी भी कंटेंट को अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो वी स्टार्ट विथ बेसिकली चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 इज क्लासिकल रेवोल्यूशन. मतलब क्लासिकल रेवोल्यूशन चैप्टर का नेम है, बट उस मॉडल को एक्सप्लेन करने में वी कैन से व्हाट इज अ सिंगल क्वेश्चन दैट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम दैट चैप्टर. वो चैप्टर नंबर 3 से भी एक्सप्लेन कर रहा है कि क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई का वर्टिकल क्यों है. और जब हमने प्राइस और आउटपुट लिखा एक्सेस पे, तो पहले तो मुझे ये बताना है इन दोनों वेरिएबल में से कौन सा नॉमिनल है कौन सा रियल है. प्राइस तो मॉनेटरी टर्म में ही होगा, तो ये नॉमिनल हो गया. और यहाँ से मैंने आउटपुट लिख रखा है, आउटपुट रियल हो गया. और क्लासिकल डाइकॉटमी है, इसका मतलब प्राइस में चेंज होगा तो आउटपुट चेंज नहीं होगा. मतलब अगर हमने प्राइस, इफ यू आर टेक प्राइस P1 और P2 और P3, नो मैटर व्हाट यू टेक प्राइस, द आउटपुट विल रिमेन सेम. तो आउटपुट विल रिमेन सेम, दैट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज गोइंग टू बी द वर्टिकल. बट वी हैव टू एक्सप्लेन नाउ व्हाई इट इज वर्टिकल, ऐसा क्यों बनता है. ठीक है, तो आपको मॉडल के टर्म में इसको एक्सप्लेन करना है. तो दिस चैप्टर विल ऑल्सो एक्सप्लेन क्लासिकल डाइकॉटमी ऑल्सो, इट इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द मॉनेटरी न्यूट्रलिटी पार्ट ऑल्सो. तो अभी इस पार्ट में आपको सिर्फ क्लासिकल कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है. एक आइडिया, एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो वी आर स्टडिंग ऑल द क्लासिकल, बट व्हाट वाज बिफोर दैट. क्लासिकल से भी पहले क्या थे. बिफोर क्लासिकल दे वर मर्केंटलिस्ट. उनका थॉट ये था कि इकोनॉमी वाज कंसीडर्ड टू बी मोर पावरफुल. जिस कंट्री के पास मोर वेल्थ होगा, और वेल्थ किस टर्म में मेजर कर रहे थे, इन टर्म्स ऑफ प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड. तो जिस कंट्री के पास ग्रेटर स्टॉक ऑफ वेल्थ है, ग्रेटर स्टॉक ऑफ प्रीशियस मेटल है, दैट कंट्री इज सपोज टू बी मोर पावरफुल. बट हाउ यू विल अक्यूमुलेट दैट मोर वेल्थ, मोर मेटल? बाय पुटिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड प्रमोटिंग योर एक्सपोर्ट. इम्पोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया सो दैट मेटल का आउटफ्लो कम होगा, और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया सो दैट मेटल का इनफ्लो ज़्यादा होगा. But over a period of time, in the context of classical, now we say that country is more powerful. That country is supposed to be more powerful, जिसका GDP ज़्यादा है. अब आप स्टॉक ऑफ मेटल से मेजर नहीं करते पावर. US और चाइना इज पावरफुल बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज साइज ऑफ इकोनॉमी. So ह्यूज साइज ऑफ इकोनॉमी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ GDP. और GDP का कहने का मतलब ये नॉमिनल GDP की बात नहीं हो रही है, रियल टर्म में. दे आर एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ आउटपुट. बट व्हाई दे आर एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ आउटपुट? व्हाई US एंड चाइना आर एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ आउटपुट?
Why not us? We are still around 3.5 trillion. They are around 20 plus trillion. Why able to produce more of output and why we are not? You can say that they have more stock of machinery, more stock of labor, better technology available, more efficiency is there. तो जितने भी पॉइंट्स आप यहाँ कह रहे हो, those points are basically highlighting the real issues. Labor is real, capital is real, technology is real. Since they have more real resources, so they are able to produce more output. ठीक है, उस टर्म में बेसिकली एक्सप्लेन करेंगे. तो व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग द क्लासिकल मॉडल, तो मैं बिकॉज बुक के अंदर जितने भी कंटेंट है उसको सिनॉप्सिस के फॉर्म में आपके नोटबुक में आना है. सो यू कैन स्टार्ट विद सम डिक्टेशन इन द क्लासिकल मॉडल. Right, on classical economics emerged as a revolution against classical economics emerged as a revolution against a body of economic principle known as mercantilism. Underline that. Known as mercantilism. Also, the features of mercantilism were A. Booleanism. Underline this also. Booleanism. That is a belief that wealth and power of a country are determined by its stock of precious metals. ठीक है, so wealth is basically the power of a country is determined by the stock of the wealth. That was the belief of mercantilism. Second, the belief in the need for state action. To direct the development of capitalist system. Next paragraph. In contrast to mercantilist, classical economics emerged. In contrast to mercantilist, classical economics emphasized the importance of real forces. Or factors in determining the
wealth of country, in determining the wealth of country. And they stress the optimizing tendency of, and they stress the optimizing tendency of, and they stress the optimizing tendency of free market, optimizing tendency of free market in the absence of state control, in the absence of state control. Optimizing tendency of free market, मतलब जो classical economists है, they are assuming that market is free, मतलब competitive market है, less interference from the government side, जैसे कहते हैं laissez faire policy, least interference from the government. और free market में जो firms होंगे they are optimizing their objective. So what could be the objective of firm? Objective of firm will be to maximize the profit. What will be the objective of consumer? To maximize their own utility. So they will buy that much commodity which maximizes their own utility. Firm will produce that much commodity which maximizes their own profit. So all are doing their best. तो जो फ्री मार्केट का फोर्सेज है, जिसको हम इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट कह रहे हैं, लाइक डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज, दैट विल गाइड द इकोनॉमी. और since each are doing their best, we are assuming that the economy is also doing its best without the interference from the government side. Remember, अब ये statement जो कह रहा है ये classical statement है. You can point out the limitation out of it. Free market works but not always. तभी तो government interference की जरूरत पड़ती है in certain areas. तो but classical thought था कि free market is working well in all the areas. Next paragraph. Classical analysis was primarily real analysis. Primarily real analysis. Underline that. Classical analysis was primarily real analysis. The growth of an economy was result of increased stock of factors of production, and advances in technology. Increased stock of factors of production and advances in technology. So according to classical, money played a role only in helping transactions. Money played a role only in helping transactions. It means money only act as medium of exchange. Money only act as medium of exchange. ठीक है, कुछ की पॉइंट्स बेसिकली आप स्टार्ट में लिख रहे हैं जिसको किसी भी आंसर में आप इनकॉर्पोरेट कर लोगे. नेक्स्ट पैराग्राफ. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट did not trust government. Classical economists did not trust government, and they stress the harmony of
individual and national interest, and they stress the harmony of individual and national interest. Individual and national interest. When market was left without regulation, when market was left without regulation, so actually they preferred least interference from the government side. Leave the market free, market will optimize its own objective. Next paragraph. Both the aspect of classical economists both the aspect of classical economics that is stress on real factor and effectiveness of free market mechanism effectiveness of free market mechanism developed in the course of controversy over long run question concerning the determinants of economic development. So classicals believe that free market mechanism would work. Free market mechanism would work to provide market for any good that were produced bracket में says law. So market will provide for any good that were produced. So you have written so far some major points in the classical model. अब when you have to derive the supply curve, तो obviously start में कुछ tools लिए जा रहे हैं. All are not part of your answer, but you have to explain that. मतलब आपके नोटबुक में रहेगा, बट आपको यूज़ करते समय देखना है कि how much is the weightage of that question, वो रिक्वायर कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, बट वी हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन फंक्शन. तो इस तरीके के शॉर्ट सब हेडिंग बनाते रहना. क्लासिकल मॉडल का प्रोडक्शन फंक्शन लिख रहे हैं. तो प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. तो आउटपुट हो गया y, दैट y इज अ फंक्शन ऑफ, जो इकोनॉमी का आउटपुट होगा इट इज अ फंक्शन ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन. सो y इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल. लेबर कहने का मतलब नॉट द अमाउंट ऑफ लेबर अवेलेबल, इट इज द अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड. जो वर्क करेंगे वही तो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे. सो प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एम्प्लॉयड. इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, बट सारे फैक्टर्स को अभी इक्वेशन में नहीं ले रहे. फिर हमने कैपिटल को क्या कर लिया, अभी कॉन्स्टेंट कर लिया. तो y इज एक्सप्लेन एज अ फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर. हियर यू आर टेकिंग y as a function of n, y as a function of n, और नीचे भी स्पेस रखिएगा.
पहले इनिशियल पार्ट y as a function of n, that means keeping capital constant. If you increase more labor, what will be the effect on output? अगर हम माइक्रो पढ़ रहे हैं तो माइक्रो में कहते हैं कि as you increase labor keeping capital constant, initially output will increase at increasing rate, then it will increase at decreasing rate, and finally it will start declining. बट ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो मैक्रो में ये पॉसिबल है कि सम फर्म्स के लिए इंक्रीजिंग रिटर्न हो, सम फर्म्स के लिए, तो इकोनॉमी के एग्रीगेट में कांस्टेंट भी हो सकता है. कांस्टेंट रिटर्न का मतलब हो जाएगा लाइन को आप यहाँ पे स्ट्रेट रख दिया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी डिमिनिशिंग. डिमिनिशिंग का मतलब है स्लोप धीरे धीरे क्या करते जाना है, कम करते जाना. तो दिस इज वाई एज अ फंक्शन ऑफ capital which is constant and employment of labor. Y as a function of capital and employment of labor. अब मुझे कुछ बेसिक पॉइंट्स आप बता दो. मैंने डायग्राम में दो वेरिएबल लिए हैं, एक y लिख दिया और एक n लिख दिया, बट इक्वेशन में कितने हैं, 3 है. तो व्हाट अबाउट द थर्ड, उसको कांस्टेंट माना है. सो दैट फंक्शन इज ड्रॉन कीपिंग कैपिटल कांस्टेंट. अगर वो कांस्टेंट चेंज हो गया तो, अगर वो कांस्टेंट चेंज हो गया तो पूरा कर्व शिफ्ट हो जाएगा. जिस वेरिएबल को आप एक्सेस पे नहीं लिखते हैं, अगर वो चेंज हो रहा है तो कर्व शिफ्ट हो जाएगा. दैट मीन्स सेम लेबर कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ आउटपुट विथ बेटर टेक्नोलॉजी. सेम लेबर कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ आउटपुट विथ मोर इक्विपमेंट. तो अगर हमने कैपिटल या टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. सिर्फ इसका ध्यान रखना है. सो व्हेन वी आर ड्राइंग द लाइन वी आर अज्यूमिंग कैपिटल कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट मान करके ड्रॉ कर रहे हैं. तो प्रोडक्शन फंक्शन इज बेसिकली ड्रॉन एज y एज अ फंक्शन ऑफ n. अब फ्रॉम दैट प्रोडक्शन फंक्शन वी कैन कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोडक्ट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल? मार्जिनल मीन्स व्हाट, एडिशनल होता है, चेंज होता है. आप उसको जिस टर्म में यूज़ करो, मार्जिनल प्रोडक्ट हो सकता है, मार्जिनल कॉस्ट हो सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी हो सकती है. तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर वी आर कैलकुलेटिंग, इसको लिखेगा MPN. ठीक है, जैसे फ्रंट में लिख रहे हैं वैसे डिनोट करना. मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या, चेंज इन द आउटपुट ड्यू टू चेंज इन एम्प्लॉयमेंट. चेंज इन द आउटपुट ड्यू टू चेंज इन एम्प्लॉयमेंट मतलब एक तरीके से जो लाइन यहाँ बना रखी है इसका स्लोप आएगा मार्जिनल प्रोडक्ट. तो अगर ये लाइन स्टार्ट में स्ट्रेट है तो यहाँ पे लाइन हॉरिजॉन्टल बनाओगे. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को यहाँ मेजर कर रहे हैं, इनिशियली हॉरिजॉन्टल, और जब स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो लाइन नेगेटिव कर देते. दिस इज द MPN लाइन, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर रहे हो, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर. तो प्रोडक्शन फंक्शन इज शोइंग व्हाट, द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, एंड फ्रॉम दैट प्रोडक्शन फंक्शन वी डिराइव. तो अब अगर ये फंक्शन उधर शिफ्ट होगा तो हमने इस फंक्शन से इसको डिराइव किया है, तो अगर ये फंक्शन शिफ्ट हो गया तो ये भी शिफ्ट होगा. ठीक है, फंक्शन शिफ्ट करोगे तो ये भी लाइन शिफ्ट होगी. फंक्शन कब शिफ्ट होगा, कैपिटल चेंज हो जाए या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए. तो व्हेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी विल इंप्रूव, तो अबव डायग्राम का प्रोडक्शन फंक्शन आप शिफ्ट करोगे और लोअर डायग्राम में मार्जिनल प्रोडक्ट राइट साइड शिफ्ट कीजिएगा. ठीक है, वो उस पॉइंट में जब किसी क्वेश्चन में उसकी जरूरत पड़ती है. अब यहाँ कंटेंट लिखो, प्रोडक्शन फंक्शन समराइजेज द रिलेशनशिप बिटवीन, production function summarizes the relationship between total input and total output. Assuming a given technology. For some, the short run production function
The short run production function is a technical relationship. The short run production function is a technical relationship that determines the level of output, given the labor input. We must note that this production function can shift up. Due to improvement in technology, or increase in stock of capital. अब ध्यान देना, this diagram is just explaining the relationship. ये relationship बता रहा है between employment of labor and output. So if employment of labor will be N1, then you can say that output will be Y1. If employment of labor will be N2, then we can determine the output according to the function and can say that output is Y2. ये तो सिर्फ relationship है. Actual में how much will be the employment? Because employment output को determine करेगा. Y किसका फंक्शन है? N का फंक्शन है, और N मतलब एम्प्लॉयमेंट. क्लासिकल मॉडल में एम्प्लॉयमेंट विल बी डिटरमाइन इन द लेबर मार्केट, और क्लासिकल मॉडल का असम्पशन क्या है? क्लासिकल मॉडल बिलीव्ड इन फुल एम्प्लॉयमेंट. ये क्लासिकल मॉडल कह रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट, और मैंने कहा फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट एम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बाय लेबर डिमांड एंड. तो क्लासिकल मॉडल में एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड इन द लेबर मार्केट, एंड in the labor market labor demand is always equal to labor. If they will not be equal, then what will happen? Wage adjust कर जाएगा, and wage will adjust immediately, so that demand automatically becomes equal to supply. तो अब आपको दो साइड एक्सप्लेन करनी है, एक तो लेबर का डिमांड और दूसरा लेबर का सप्लाई साइड. वो डिमांड्स लेबर, हाउ मच लेबर दे विल डिमांड, व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव. जो फर्म गुड्स प्रोड्यूस करें उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हाउ मच लेबर दे विल हायर सो दैट देयर ओन प्रॉफिट गेट मैक्सिमाइज. पहला तो आंसर वो करना है आपको. फर्म विल बी डिमांडिंग द लेबर, बट दे विल डिमांड दैट मच ऑफ लेबर वेयर देयर ओन प्रॉफिट गेट, एंड वी ऑल नो व्हाट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन. मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. So they will produce that much quantity where MR becomes equal to MC, and for that purpose how much labor they will demand. The first part of answer will be that. Second, who supplies labor? Household. How much labor they will supply? How much we will work? We will work that much so that we can maximize our own utility. But we get utility from what? We get utility from how much income we have, so that how much goods I can purchase. But at the same time I get utility from not working also, that is leisure. If only consuming goods gives you utility, then obviously you will try to maximize your income. But income को use करने के लिए हमारे पास free time भी होना चाहिए. You need weekend also. But why you need weekend? अगर हमारे theory में कहें कि maximization of the goal is to maximize the income only, and you should be working all the 24 hour. So you get utility from not only income, you get also utility from leisure time. So combining that we have to maximize the utility. तो दो पार्ट बेसिकली अब एक्सप्लेन करने हैं.
एक तो लेबर का डिमांड साइड आएगा, दूसरा लेबर का सप्लाई साइड आएगा। तो पहला टूल याद रखिएगा, अभी हमने प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन किया। नाउ वी आर मूविंग टू लेबर मार्केट, ऐसे शॉर्ट हेडिंग बना सकते हो। लेबर मार्केट को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट विल टॉक अबाउट लेबर डिमांड, देन लेबर सप्लाई। तो मेक द हेडिंग ऑफ लेबर मार्केट। The classical economics assume that employment of labor is determined by forces of demand and supply, in the labor market. Forces of demand and supply in the labor market. The main feature of classical labor market analysis is the main feature of classical labor market analysis is the assumption that market works well. It means firms and individual workers optimize their objective. And they have perfect information about relevant prices. In addition, there are no barriers. To adjustment of money wage. And market always clear. This paragraph is basically stating the assumptions of the model. So what we are assuming that this labor market works well, and this labor market always get cleared. Cleared means labor demand will always be equal to labor supply, and if they are not equal, then wage will adjust. और वेज के एडजस्टमेंट में कोई बैरियर नहीं है। बैरियर क्या हो सकते थे? मिनिमम वेज लॉ गवर्नमेंट का। तो वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो सच बैरियर। फर्म अपने ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करेगा, वर्कर अपने ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करेंगे। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट पार्ट, दैट इज डिमांड फॉर लेबर। Demand for labor. As you said, labor will be demanded by firm, and firms have the objective of, firms का objective क्या है? Maximize their profit, and this profit maximization condition require that marginal revenue must be equal to marginal
cost. Firm should produce that much quantity where their profit get maximized. So MR must be equal to marginal cost. ये इंटायर जो क्लासिकल मॉडल है, रिमेंबर ये इंटायर क्लासिकल मॉडल अज्यूम करता है कि मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय परफेक्ट कंपटीशन. अब आप ये बताओ, अगर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर फर्म्स तो प्राइस टेकर होते हैं, मतलब प्राइस उनके लिए कांस्टेंट होता है. तो जब प्राइस कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट प्राइस किसके बराबर हो गया? एमआर के बराबर है. तो इन प्लेस ऑफ एमआर व्हाट यू कैन राइट? प्राइस. तो मैंने इस एमआर की जगह क्या लिख दिया? प्राइस लिख दिया. इन प्लेस ऑफ एमआर आई एम राइटिंग प्राइस बिकॉज क्लासिकल मॉडल बिलीव दैट मार्केट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, तभी लिखा है. मोनोपोली होगी तो ऐसा नहीं करना है. बट क्लासिकल कंसेप्ट है कि मार्केट कॉम्पिटिटिव, और क्लासिकल कंसेप्ट है. देयरफॉर इन प्लेस ऑफ एमआर यू आर राइटिंग प्राइस. अब क्वेश्चन रह गया मार्जिनल कॉस्ट. सो व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट. अब मुझे आप ये बताना, जैसे हम पहले भी कॉपी नहीं करना, जिस पहले यहाँ समझ लीजिएगा, पहले ये रफ में समझ लीजिए. आप आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर. तो जिसमें कैपिटल हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, टेक्नोलॉजी को भी कांस्टेंट रखा हुआ है. तो हाउ यू कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट? बाय यूजिंग मोर लेबर. तो जो लेबर कॉस्ट होगा वही तो मार्जिनल कॉस्ट होगा. एडिशन टू कॉस्ट जो भी आएगा वो इट विल बी ड्यू टू एडिशन टू द लेबर कॉस्ट ओनली, बिकॉज कैपिटल इज कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट. तो अब एक एडिशनल यूनिट बनाने का एडिशनल लेबर कॉस्ट कितना होगा? एग्जांपल बता रहा हूं पहले. Suppose I say that the workers has to be paid a wage of ₹100 per hour. वर्कर को वेज आपने पे कर रखा है ₹100 per hour. So what will be the cost? You can't say ₹100. ₹100 नहीं कह सकते, बिकॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि वर्कर को हमने 1 आवर के लिए ₹100 दिया है. इन 1 आवर हाउ मेनी यूनिट वर्कर इज प्रोड्यूसिंग? If you say that worker is producing 1 unit, 1 घंटे में वर्कर ने 1 यूनिट बनाया, फिर तो 1 यूनिट का कॉस्ट 100 हो गया. बट अगर वर्कर ने 2 यूनिट बनाया तो 50 होगा, 4 बनाया तो, मतलब जो वेज है उसको आप उस यूनिट से डिवाइड कर रहे हो. और इन 1 आवर वर्कर जो भी प्रोडक्शन करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट लेबर. इन 1 आवर वर्कर ने 1 बनाया, 2 बनाया, 4 बनाया, दैट नंबर विल बी कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. तो अब आप इफ आई से मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज 1, अब जरा ध्यान से देखना, एमपी अगर मैंने 1 कहा ना तो ये मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा वेज अपॉन एमपीएन, मतलब 100/1. इफ आई से इट इज 2 तो आपको 50 हो जाएगा, तो वेज अपॉन एमपीएन. इफ इट इज 4 तो जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, दैट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज व्हाट? वेज डिवाइडेड बाई एमपीएन होता है. वेज डिवाइडेड बाई एमपीएन होता है. एग्जांपल क्लियर है? ये मार्जिनल कॉस्ट डायरेक्टली वेज नहीं लिखना है, बिकॉज वेज फॉर 1 आवर है. इन 1 आवर वर्कर में प्रोड्यूस मोर देन 1 यूनिट ऑल्सो. तो वेज को किससे डिवाइड करोगे टू गेट मार्जिनल कॉस्ट? वेज डिवाइडेड बाई एमपीएन इज मार्जिनल कॉस्ट. तो अब जरा यहाँ पे बताना मार्जिनल कॉस्ट की जगह क्या लिखूं मैं? इन प्लेस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट यू विल राइट वेज डिवाइडेड बाई एमपीएन. क्लियर? इस कंडीशन को अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्राइस मल्टीप्लाइड बाई मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू वेज. मैंने मार्जिनल प्रोडक्ट को जब प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी. मार्जिनल प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस से तो मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी. इसको आप वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट भी कह सकते हो. तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू वेज. फर्म का प्रॉफिट तब मैक्सिमाइज होगा व्हेन फर्म विल एम्प्लॉय दैट मच लेबर वेयर वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू वेज. दूसरा पॉइंट इसी को आप ऐसे भी ले सकते हो, W/P की जगह क्या ले सकते हैं? W/P इक्वल टू व्हाट? एमपीएन. तो फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा जब W/P किसके बराबर हो जाए?
और मैंने W को P से डिवाइड किया, तो इसको मैं क्या पढ़ सकता हूँ? मैंने कहा किसी नॉमिनल को प्राइस से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? रियल हो गया। तो दिस इज कॉल्ड रियल वेज। तो फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है जब रियल वेज किसके बराबर हो जाए? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के बराबर। फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा जब उसका रियल वेज वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट एक्सप्लेन करना है। पहले मैं पहले डिक्टेट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन लिखिएगा। ठीक है, ऐसे मैथमेटिकली नहीं शो करना है। आंसर जब आप लिखेंगे तो इट शुड अपीयर कि वो डिस्क्राइब कर रहे हो आप। तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वो इक्वेशन लिखेंगे, रिमेनिंग को सॉल्व हेड। लेबर इज डिमांडेड बाय फर्म्स, labor is demanded by firms and competitive firm will produce that much output. Competitive firm will produce that much output. Competitive firm will produce that much output where its own profit get maximized, where its own profit get maximized, where its own profit get maximized, after comma, which requires that MR is equal to MC, which requires that MR is equal to MC. In a competitive market, marginal revenue is equal to price, MR equal to P. In a competitive market, marginal revenue is equal to price. And marginal cost, that is marginal labor cost, is equal to nominal wage, divided by marginal product of labor. Nominal wage divided by marginal product of labor. That is, अब ये इक्वेशन लिख देना। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आपने लिखा स्टार्ट में MR इक्वल टू MC, MR की जगह क्या लिख दिया, और MC की जगह W बाई MPN, और फिर वो करके लास्ट में स्टॉप में लिख दिया W बाई P इक्वल टू MPN, W बाई P इक्वल टू MPN, W बाई P इज इक्वल टू MPN। Thus, the profit maximizing quantity of labor demanded by a firm is determined by equality of real wage, that is WIP, real wage and marginal product of labor, that is why marginal product of labor curve, MPN curve, that is why marginal product of labor curve is called labor demand curve, that is why marginal product of labor curve, that is MPN, is called labor demand curve। लेबर का डिमांड कर्व MPN कर्व होगा ग्राफ में, इसका मतलब ये।
मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की लाइन नेगेटिवली स्लोप्ड, ये कहाँ से आया? ये प्रोडक्शन फंक्शन से लिया हमने, ठीक है, यहाँ से प्रोडक्शन के फंक्शन से ये डिराइव किया गया, ये वाला डायग्राम यूज कर रहे हो। फ्रॉम दैट प्रोडक्शन फंक्शन यू डिराइव दिस। नाउ हाउ मच लेबर विल बी डिमांडेड बाय फर्म, ये तो रिलेशनशिप हो गया, कितने लेबर का डिमांड होगा, 1 2 3 4, वो डिपेंड करता है कि हाउ मच इज द वेज। इफ आई से दैट वेज इज W1 by P1, so at that wage how much labor will be demanded? Remember प्रॉफिट वही मैक्सिमाइज होगा जहाँ पे W by P किसके बराबर हो जाए, MPN के बराबर हो गया। तो गिवन दिस वेज लेबर डिमांड विल बी डिसाइडेड बाय दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, तो एट दैट वेज डिमांड फॉर लेबर इज वी कैन से N1, बट इफ वेज वुड हैव बीन लोअर देन, अगर वेजेस कम होते तो लाइक यहाँ पे पोजीशन होता तो अगर यहाँ पे पोजीशन हो जाता है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट फिर यहाँ आ जाएगा, ये लेबर का डिमांड हो जाएगा, ये एक अलग वेज हो गया W2 by P2। तो दिस इज वन पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, ये कनेक्ट करके ये जो MPN लाइन है ना, दिस लाइन इटसेल्फ इज कॉल्ड एज लेबर डिमांड। तो आपसे कहूँ लेबर डिमांड का बनाना है तो कौन सी लाइन बनाओगे आप, MPN का बनाएंगे। वो MPN कब शिफ्ट होगा, ये MPN की लाइन कहाँ से हमने डिराइव कर रखी है, प्रोडक्शन फंक्शन से। अगर प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्ट हो गया तो ये भी शिफ्ट कर दीजिएगा। ये अब सेकंड डायग्राम हो गया। So this is one side of the labor market which is labor demand. Below that supply of labor, ठीक है, इस डायग्राम के बाद आप लेबर सप्लाई, labor services are supplied by individual workers. Labor services are supplied by individual workers. Labor services are supplied by individual workers. So some classical economists, classical economists assume that individuals attempt to maximize utility. Individuals attempt to maximize utility and utility depends positively on real income. Utility depends positively on real income. Real income and leisure. Real income and leisure. Real income and leisure. Leisure that is not working or free time. Real income and leisure. जरा यहाँ समझना है पहले। Labor will be supplied by the workers, and how much hour of labor they will supply, that depends upon how and when they maximize their own utility, and they get utility from leisure as well as income, दोनों से उन्हें utility मिलती है। अब एक माइक्रो एग्जांपल पहले समझ लो। Every person has a total time available of 24 hours for work or for leisure.
मैंने एक्सेस पे लेकिन यहाँ लेजर लिखा है, इसका मतलब अगर कोई पॉइंट यहाँ पे मार्क करते हैं, लेट अस से इफ आई राइट हियर 8, हाउ टू रीड दिस डायग्राम, यू विल रीड 8 आवर लेजर, remaining 16 work. If I write here 16 hour leisure, rest 8 work. So if I take 24 then 24 hour leisure, तो obviously income 0 हो जाएगा फिर. If I take 0 then 0 leisure हो गया, 24 hour work. So by working 24 hour you can earn the maximum income. So if by working 24 hour a person is earning 2400, it means wage rate is 100 rupees per hour. तो मैंने इन दोनों पॉइंट को यहाँ से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया स्ट्रेट लाइन से. एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी 100 और वो 100 वेज रेट है. मतलब यहाँ जो स्लोप बन रहा है ना, लाइन का जो स्लोप है वो वेज रेट है. वेज बढ़ जाए तो स्लोप 100 की जगह 200 अगर वेज होता, तो अगर 200 वेज होगा तो यहाँ पे 2400 की जगह 4800 लगेगी. ठीक है ना. हाउ मच टाइम पर्सन विल एक्चुअली वर्क, वो उसकी यूटिलिटी फंक्शन का, तो ये कंज्यूमर का यूटिलिटी फंक्शन है इंडिफरेंस का. गिवन दिस लाइन उसकी यूटिलिटी यहाँ मैक्सिमाइज हो रही है. सो सपोज इफ आई टेक दिस पॉइंट एंड देन मार्क इट एज, मैंने यहाँ पे मार्क करके लिखा है 10. इसका मतलब क्या हुआ, द वर्कर चूजेस टू वर्क 10 तो लेजर है, 14 आवर वर्क हो गया. तो मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर दिया. यहाँ पे देखो, अब जब राइट साइड लिखेंगे तो लेजर की जगह यहाँ क्या लिखोगे आप, ये सब कुछ आवर में मेजर हो रहा है अभी. तो एक गिवन वेज रेट पे 10 रुपीज पे उसका वर्किंग आवर क्या हो गया, 14 हो गया. बाय कनेक्टिंग दिस टू आई गेट 1 पॉइंट. If wage rate is higher, then what will be the outcome? Wage rate अगर हायर होगी तो लाइन का स्लोप चेंज हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन विल चेंज. बट एज वेज रेट विल इंक्रीज, whether worker will work more or less, guided by two things. एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, एक इनकम इफेक्ट होता है. जो वेज रेट है वो लेबर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. अगर मैं 1 घंटे वर्क नहीं करता हूँ तो मैंने क्या सेक्रीफाइस किया, जो वेज मुझे मिल रहा था. तो इफ वेज रेट वाज 100 रुपीज, आई सेक्रीफाइस 100 रुपीज बाय नॉट वर्किंग एन आवर. इफ वेज रेट इज 200, देन आई सेक्रीफाइस्ड. सो एट अ हायर वेज लेजर बिकम्स एक्सपेंसिव. सो ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्कर विल वर्क मोर एंड हैव लेस लेजर. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से वर्क बढ़ेगा. बट इनकम इफेक्ट कहता है कि एज योर इनकम गोज अप you prefer to consume more of normal goods and leisure is considered to be normal. So as our income will increase, we will have more leisure, but we can have more leisure only when we work less. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से वर्क बढ़ेगा और इनकम इफेक्ट की वजह से वर्क कम हो जाएगा. तो अगर सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट ग्रेटर है तो वर्क बढ़ेगा. ग्राफ में कहाँ शो कर सकते हैं, वर्किंग आवर आपने इसको वर्किंग आवर का है, ये 14 है. आई एम सेइंग वर्किंग आवर विल इंक्रीज. सो वेयर विल बी द टेंडेंसी, राइट साइड बनाइए या लेफ्ट साइड, लेफ्ट की तरफ शो करो. अब अगर यहाँ पे है तो आप कह सकते हो कि 8 आवर इज यूज एज लेजर, तो रिमेनिंग 16 फॉर. तो एट अ हायर वेज रेट वर्कर इज वर्किंग मोर. तो यहाँ तक तो लेबर का जो स्लोप सप्लाई कब होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा. वेज रेट फर्दर इंक्रीज करेंगे तो वर्कर में वर्क लेस ऑल्सो. बट दैट बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई का इज करेक्ट फॉर 1 पर्सन इंडिविजुअल. माइक्रो में पढ़ेंगे तो बैकवर्ड बेंडिंग बना लेंगे. बट हियर वी आर नॉट डूइंग सप्लाई ऑफ 1 वर्कर, वी आर डूइंग सप्लाई फॉर कंप्लीट इकोनॉमी. तो अज्यूमिंग दैट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज मोर देन इनकम इफेक्ट, यू ड्रॉ लेबर सप्लाई का ओनली पॉजिटिवली स्लोप. तो दिस इज योर लेबर सप्लाई का. और एक्सेस पे यहाँ पे सिर्फ लिखोगे W/P. ठीक है. नेक्स्ट डायग्राम रीड होता है पेपर में, लेकिन ये सारा हर जगह यूज नहीं होना. रिमेंबर, मैं अभी आपको बुक चैप्टर में जो लिखा है वो डिक्टेट कर रहा हूँ. आंसर लिखते समय इट इज नॉट नेसेसरी कि यू विल एक्सप्लेन द टूल ऑल्सो कि हाउ इट हैज बीन डिराइव्ड. यू विल सिंपली यूज द लेबर सप्लाई एंड लेबर डिमांड डायरेक्टली. बट वो खुद को समझ में आना चाहिए कि हमने उसको डिराइव कैसे किया.
बाइसेक्ट नहीं करना, कहीं भी टेंजेंसी है। इंडिफरेंस का तो सिर्फ रिलेशनशिप है, वो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम लेजर एज वेल एज कंजम्पशन, उसका एक रिलेशनशिप वो डिटरमाइन कर रहा है सर। व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर एंड इनकम विच गिव्स यू सेम satisfaction. So if you have a higher indifference curve, utility will be more. So given that wage constraint, given that constraint line where utility will be maximized, it will be maximized only when it is tangent. अगर आप intersection लेंगे मतलब there is a possibility to increase it further. तो टेंजेंसी का पॉइंट हमेशा क्या होगा, जहाँ यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगा, therefore you choose to draw only the टेंजेंसी part. Assuming that substitution effect dominate income effect, assuming that substitution effect dominate income effect, assuming that substitution effect dominate income effect, we get positively sloped labor supply curve. We get positively sloped labor supply curve. We get positively sloped labor supply curve. So this is your third diagram. अब हमारे पास तीन रिलेशनशिप हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई, ये टूल हो गए. By using these three, now we can answer the question. So now the major heading below that is equilibrium employment and output. Determination of equilibrium employment and output. First of all, when we explain this part, one relationship is production function. So production is a function of capital which is constant and employment of labor. We have to draw one line. This production function का एक diagram बनेगा. दूसरा labor demand is a function of real wage. Labor supply is also a function of real wage, but ये positive function और ये negative function. And in the classical model, we assume that labor demand is always equal to labor supply. And if they are not equal, then what will adjust? Wage will adjust. अगर demand supply बराबर नहीं होंगे तो wage automatically change हो जाएगा. So by using this argument, we have to explain the relationship. You can draw three different part of diagram. Production function के लिए एक बना लेंगे यहाँ labor demand labor supply के लिए, and here aggregate supply curve.
3 पार्ट डायग्राम ऐसे बन जाए। Here you draw the production function फर्स्ट डायग्राम में, सेकंड में लेबर डिमांड लेबर सप्लाई, और थर्ड में एग्रीगेट सप्लाई का। प्रोडक्शन फंक्शन बनाना है तो यू हैव टू राइट y and n ऑन एक्सेस। लोअर पार्ट में लेबर डिमांड है और लेबर सप्लाई है तो W/P और n लिखोगे एक्सेस पे। और इधर थर्ड डायग्राम में प्राइस एंड आउटपुट। One by one, initially draw the production function line. That means y as a function of capital and employment of labor. Capital constant है, capital and employment of labor. Employment will determine output, and employment will be determined in the labor market by labor demand and labor. So in the lower part, draw the labor demand curve and labor supply curve. Labor demand is which curve? MPN curve. Labor supply, their equality will determine full employment. You can write it NF, and that will also determine a real wage W1 by P1. Now, given this employment of labor, how much will be the production? How much output will be produced by labor NF? वो डिटरमाइन हो जाएगा प्रोडक्शन फंक्शन से। सो फॉर दिस NF, एक्सटेंड लाइन टिल YF। यहाँ से Y की वैल्यू आ जाएगी, उस Y को कहेंगे YF, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। ठीक है, अब आप ये बताओ, इफ दैट मीन्स आउटपुट YF है, एक सर्टेन नंबर होगा, इस YF को आप इस राइट साइड वाले डायग्राम में प्लॉट कर दिया। YF के अमाउंट को हमने राइट साइड यहाँ पे प्लॉट कर दिया। सपोज दैट आउटपुट इज YF। ठीक है, जो भी मार्किंग यहाँ पे 120 वट एवर भी है वो वहाँ पे मार्क कर दिया। दैट विल बी आउटपुट एट व्हाट प्राइस? हाउ मच इज प्राइस? तो P1 एक सर्टेन नंबर है, उस P1 को यहाँ पे एक्सेस पे इधर कहीं मार्क कर लिया। तो एट प्राइस P1 आउटपुट इज हाउ मच? YF वी गेट 1 पॉइंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व। हमें 1 पॉइंट मिला एग्रीगेट सप्लाई कर्व पे, वी हैव 1 पॉइंट ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब जरा यहाँ सोच के बताना, इफ आई से दैट प्राइस इज अ P2, देन हाउ एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दिस YF? प्राइस अगर P1 से P2 किया तो वो ड्रॉ नहीं करना, डायग्राम में देखिए। इफ प्राइस इज P2 देन व्हाट विल बी द आउटकम? पहले यहाँ डायग्राम में चलो, अगर मैं कह रहा हूँ प्राइस हायर है तो एक गिवन नॉमिनल वेज पे अगर हमने प्राइस हायर ले लिया तो ये रियल वेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रियल वेज की वैल्यू फिर डाउनवर्ड आ जाएगी। ठीक है, नॉमिनल सेम रखा है, W को W1 ही रखा है, बट प्राइस P1 की जगह क्या लिख दिया? P2 कर लिया, तो रियल वेज विल फॉल। बट एट एनी रियल वेज लोअर देन दिस, लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई आर नॉट equal, they are not equal. What is exactly the case? At any real wage lower than that, labor supply is less and labor demand is, और क्लासिकल assumption कह रहा है कि अगर लेबर का सप्लाई और लेबर का डिमांड बराबर नहीं है then what wage will adjust। तो यहाँ पे लेबर का डिमांड ज़्यादा है और लेबर सप्लाई, therefore what will be the impact on wage? इंक्रीज होगा, और कब? wage will adjust immediately। तो अगर हमने प्राइस को P1 से P2 किया है तो ये वेज भी W1 से बढ़ के क्या हो जाएगा? W2 हो जाएगा, मतलब वो भी हार हो जाएगा।
और दोनों का चेंज इनफैक्ट सेम प्रोपोर्शन में हो जाएगा, सेम प्रोपोर्शन में चेंज, इफ सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगी तभी वैल्यू W1/P1 के बराबर होने। अगर डिफरेंट प्रोपोर्शन ले तो या तो वैल्यू इसके नीचे रह जाएगी या इसके, दोनों ही कंडीशन में वेज चेंज होता रहेगा। सो वेज विल ऑल्सो इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। तो अगर वेज सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो गया है तो इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट विल रिमेन सेम, एम्प्लॉयमेंट सेम रह गया तो आउटपुट भी क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। दैट मीन्स यू टेक अ हायर प्राइस बट इवन एट दैट हायर प्राइस द आउटपुट विल रिमेन सेम। अब फिर से प्राइस P2 से अगर P3 कर लें तो सेम लॉजिक विल बी अप्लाई। So no matter whatever be the value of price, the output will remain same, and therefore you get vertical aggregate supply curve. इसके क्लासिकल मॉडल का सप्लाई कर्व कैसा बनेगा, वर्टिकल बनता है। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व। क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल बी वर्टिकल, मतलब y की वैल्यू हमेशा yf के बराबर ही होगी। और ये क्लासिकल डायकोटमी भी बता रहे हैं, बिकॉज यू चेंज प्राइस विच इज अ नॉमिनल वेरिएबल बट दैट चेंज इन प्राइस इज नॉट अफेक्टिंग आउटपुट विच इज अ रियल वेरिएबल। तो डायकोटमी इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाय दिस डायग्राम। एनी क्वेश्चन ऑन द क्लासिकल मॉडल, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो बेसिकली इससे पहले जो हमने लिख रखा है ना वो आपके रजिस्टर में रह जाएगा। हियर ऑनवर्ड्स जो आप लिखेंगे वो हम आगे आंसर के पार्ट में, दिस बेसिकली विल बी द मेन, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। सो एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड इन द लेबर मार्केट बाय लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई। आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्शन function, and by using these two we determine the aggregate supply curve. And output in the classical model is determined from which side? आउटपुट क्लासिकल मॉडल में किस साइड से डिटरमाइन होना है, सप्लाई से ही होना है। डिमांड का तो रोल से प्राइस डिटरमाइन करने के लिए होगा, आउटपुट का डिटर्मिनेशन तो हो गया। तो दिस इज ऑल्सो द थियरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इन द क्लासिकल मॉडल, हाउ आउटपुट गेट डिटरमाइन इन द क्लासिकल मॉडल। So explain this part first. In classical model, a real output, comma employment, real output, employment, and real wage are endogenous variable, are endogenous, underline that term, are endogenous variable, which means they are determined within the model, Therefore, production function, comma labor demand, comma labor supply, and equilibrium condition of labor market, determines output, employment, and real wage. Output, employment, and real wage. Next paragraph. As shown in above diagram,
when price table increases from P1 to P2, when price table increases from P1 to P2, when price table increases from P1 to P2, then with given money wage, the real wage decline. Then with given money wage, the real wage decline. The real wage decline. So at that low real wage, at that low real wage, at that low real wage, there will be excess demand for labor. There will be excess demand for labor. There will be excess demand for labor. Full stop. Under classical assumption of wage flexibility, under classical assumption of wage flexibility, under classical assumption of wage flexibility, nominal wage will increase. Under classical assumption of wage flexibility, nominal wage will increase so that full employment is maintained. So that full employment is maintained. Full employment is maintained. So with full employment of labor, with full employment of labor, the output remains at full employment level. The output remains at full employment level. This explains why classical aggregate supply curve is vertical. This explains why classical aggregate supply curve is vertical. Why classical aggregate supply curve is vertical. Underline that. Classical aggregate supply curve is vertical. It also explains classical dichotomy. It also explains classical dichotomy. It also explains classical dichotomy. Underline that word, classical dichotomy, which means change in nominal variable like price, change in nominal variable like price will not affect a real variable like output. Will not affect real variable like output. Will not affect real variable like output. तो क्लासिकल जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, दैट एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल. You must always remember the derivation part of that. Why classical aggregate supply curve is vertical, but remember it is vertical at what level of output? ये वाई पे. No matter where you draw the aggregate demand का, the output will remain. इसलिए कहते हैं in the classical model output is determined from the supply side. हमने अभी एग्रीगेट डिमांड पढ़ा नहीं, बट जब एग्रीगेट डिमांड पढ़ लेंगे तो एग्रीगेट डिमांड का जो पोजीशन होगा वो सिर्फ क्या डिटरमाइन करेगा? प्राइस का डिटर्मिनेशन करेगा. नो मैटर वेयर यू ड्रॉ द एग्रीगेट डिमांड कर्व, द आउटपुट विल रिमेन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. तो इन द क्लासिकल मॉडल आउटपुट गेट डिटरमाइंड बाय द सप्लाई साइड. आउटपुट सप्लाई साइड से डिटरमाइन है. अब क्वेश्चन ये बनता है कि आउटपुट फिर चेंज हो सकता है कभी क्लासिकल मॉडल में? क्या आउटपुट चेंज हो सकता है? क्या ये वैल्यू चेंज हो सकती है?
Yes, it can, because this output is determined by, when you derive the aggregate production YF, we have taken a production function. In that production function we have kept capital and technology. So if that capital or technology will change, then output can change. So output in the classical model can change, but remember output is a real variable, so it will change because of a real factor. Real factor like capital, real factor like technology, real factor like efficiency of labor, रियल फैक्टर लाइक एम्प्लॉयमेंट. तो वो चेंज हो सकता है जब रियल फैक्टर चेंज होंगे इकोनॉमी के अंदर, देन ओनली इट कैन चेंज. तो अब यहाँ हियर ऑनवर्ड्स बेसिकली कंटेंट में क्या होता है, यू मस्ट रिमेंबर व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द आउटपुट एंड ऑल्सो रिमेंबर व्हाट आर द फैक्टर दैट विल नॉट अफेक्ट द आउटपुट. दोनों ही चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. किस फैक्टर की वजह से आउटपुट चेंज होगा, किस फैक्टर की वजह से आउटपुट चेंज नहीं होगा, दोनों ही क्लियर होंगे. बट यहाँ तक के कंसेप्ट को आप पहले यूज़ कर लो टू आंसर दिस पार्ट, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ शो किया था. हमारे पेपर में आपको क्वेश्चन ये पूछा गया, एक्सप्लेन हाउ द इकोनॉम एम्प्लॉयमेंट एंड रियल वेज वुड चेंज इन अ टिपिकल क्लासिकल मॉडल इन द इवेंट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ लेबर, मनी वेज बिकम्स रिजिड. तो क्लासिकल मॉडल के जो आर्गुमेंट है वो स्टार्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट तो आप वैसे यूज़ करोगे. ये क्लासिकल मॉडल में आउटपुट डिटरमाइन होता है फ्रॉम द सप्लाई साइड, लेबर मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा बिकॉज ऑफ फुल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज एंड सो ऑन. बट इस पार्ट को अगर आप लेटर से आंसर कर रहे हो 2017 के क्वेश्चन को, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन को आंसर करते समय क्या करना है आपको, ये प्रोडक्शन का फंक्शन बनाया, लेबर डिमांड लेबर सप्लाई की लाइन बनेगी. इसमें आपको एग्रीगेट सप्लाई अगर नहीं बनाओगे तो भी वर्क चलता है, इनफैक्ट इट इज नॉट नेसेसरी. बट हमने प्रोडक्शन का फंक्शन पहले लिया, y एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर. लेबर डिमांड की लाइन बनी हुई है, लेबर सप्लाई, the intersection determine money wage W1 प्राइस P1 और यहाँ से फुल एम्प्लॉयमेंट, दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइनिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट. अगर AS बनाना है तो वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे. अब क्वेश्चन में द रेफरेंस वाज दिस, हाउ वुड इकोनॉम एम्प्लॉयमेंट एंड रियल वेज वुड चेंज. मतलब एन की वैल्यू और जो WIP की वैल्यू है वो कैसे चेंज होगा इन द इवेंट ऑफ लेबर सप्लाई बढ़ गया. तो वाई लेबर सप्लाई कैन इंक्रीज, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर लेबर सप्लाई टू इंक्रीज इन द इकोनॉमी. मतलब लेबर का जो सप्लाई का आपने बना रखा है, ये लाइन कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कि ये शिफ्ट हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब सेम वेज पे लेबर सप्लाई बढ़ गई है. तो व्हाट कुड बी द रीजन. अगर आप ऐड कर दोगे तो इट विल explain better. Labor supply can shift because of, one is the population increase, with same population also labor supply can increase with, let us say, greater female labor force participation rate, with a change in preference towards work. If workers have a preference change and they want to work more, if they want to work more, it means at the same wage rate, earlier they were willing to work for 8 hours. Now at the same wage rate they are willing to work for 10 hours. So that could also affect the labor supply curve. So if labor supply curve has increased because of that change, तो आपने लेबर सप्लाई की लाइन को यहाँ पे एक्चुअल में राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया. Now what will be the outcome? आउटकम क्या होगा? क्वेश्चन दोबारा पढ़िए. क्वेश्चन कह रहा है कि मनी वेज यू कांट चेंज दैट W, उसको चेंज नहीं कर सकते आप. क्लासिकल मॉडल में जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है वो क्वांटिटी ऑफ मनी से होता है, वो सब्सिक्वेंट क्लास के अंदर ज़्यादा प्रूव हो जाएगा. ऑल्दो मतलब इन क्लासिकल मॉडल प्राइस तभी चेंज होगा जब मनी चेंज होगी.
तो यहाँ पे मनी तो चेंज, मनी का मतलब मनी सप्लाई, तो हियर द क्वेश्चन इज नॉट रेफरिंग टू चेंज इन द मनी सप्लाई, सो इफ देयर इज नो चेंज इन मनी सप्लाई द प्राइस विल आल्सो नॉट चेंज। और मनी वेज मतलब डब्ल्यू है, इसको क्वेश्चन ने मना कर रखा है, इट इज रिजिड, यू कांट चेंज दैट, सो व्हाट विल बी द आउटकम? आउटकम इज दैट ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ये तो तब होता है ना जब डब्ल्यू या पी कोई चेंज हो रहा होता है, दोनों में से कोई भी चेंज। सो इफ नथिंग विल चेंज देन व्हाट विल हैपन दैट एट द सेम रियल वेज देयर विल बी अ गैप, which means supply of labor is more and demand for labor is, so some labor will remain unemployed, some labor will remain unemployed, but unemployment is a characteristic of which model? We are getting that Keynesian conclusion because we are following Keynesian assumption that wages are rigid। तो आपको आंसर में बेसिकली क्या करना है, उसको इनकॉर्पोरेट करके वैसे प्रेजेंट करना था, ये पॉइंट नहीं लेना है बाई मिस्टेक, जहाँ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने ये पॉइंट ले रखा, तो आपका W चेंज नहीं होगा और प्राइस भी चेंज नहीं होगा। सो द लेबर मार्केट यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, इनफैक्ट एट द सेम वेज रेट लेबर सप्लाई इज मोर देन लेबर डिमांड एंड देयरफॉर वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन द लेबर मार्केट। अब दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एक दो जो अप्लाइड होकर के इस तरीके के आते हैं, वैसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके आंसर में लिखना है। एक जस्ट शॉर्ट पहले इसको ड्रॉ कर लेना। Read it shortly. In the event of increase in labor supply, in the event of increase in labor supply with rigid money wage, with rigid money wage, with rigid money wage, the labor market will not be in equilibrium. The labor market will not be in equilibrium. The labor market will not be in equilibrium. In fact, at that given real wage, labor supply will be more than labor demand. Labor supply will be more than labor demand. Labor supply will be more than labor demand. So there will be unemployment in labor market. So there will be unemployment in labor market. So there will be unemployment in labor market. We are getting the situation of unemployment in classical model. We are getting the situation of unemployment in the classical model. In the classical model, because
we are following Keynesian assumption of, we are following Keynesian assumption of, we are following Keynesian assumption of a rigid money wage. We are following Keynesian assumption of a rigid money wage. A rigid money wage. इसको रिमेंबर और भी तरीके से अभी फर्दर एक्सप्लेन किया जाएगा, इन द सेंस कुछ पॉलिसी का इम्प्लीकेशन होगा. लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में अगर कहा गया कि दैट इनकम टैक्स रेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड और इंक्रीज, तो क्लासिकल मॉडल में क्या फ़र्क पड़ना है. इनकम टैक्स का रेट अगर चेंज हो गया तो उसका मतलब है जब आप लेबर का सप्लाई कर्व ड्रॉ करते हो, व्हेन यू ड्रॉ द लेबर सप्लाई कर्व, तो व्हेन वी ड्रॉ दिस लेबर सप्लाई कर्व, ईच लेबर सप्लाई कर्व इज, लेबर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ वेज, बट विच वेज, बिफोर टैक्स वेज और आफ्टर टैक्स वेज. वी आर गाइडेड बाय विच वेज, हाउ मच वी विल वर्क, दैट डिपेंड्स अपॉन द रियल वेज. अगर टैक्स नहीं है इसका मतलब जो नॉमिनल वेज फॉर्म से मिला वो हमारा रिटेन हो गया, बट इफ देयर इज टैक्स ऑन द वेज ऑल्सो, देन पार्ट ऑफ द इनकम विल गो टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन. तो वर्कर का जो सप्लाई कर्व होता है वो एक्चुअल में फंक्शन होगा आफ्टर टैक्स रियल वेज का. तो आफ्टर टैक्स का मतलब हो गया इसमें से 1 माइनस टी करेंगे फिर WIP करोगे. अगर मैं कह रहा हूँ टैक्स ज़ीरो है तो ज़ीरो है तो टी की जगह से ये ज़ीरो ले लिया आपने, फिर तो वो सिर्फ WIP का फंक्शन होगा, बट ये टैक्स का फंक्शन है. तो वर्कर्स आर इंटरेस्टेड इन आफ्टर टैक्स रियल वेज. तो अगर मैं कह रहा हूँ इनकम टैक्स रेट डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, उनका आफ्टर टैक्स वेज बढ़ जाएगा. तो बढ़ जाएगा देन दे विल बी इंड्यूस्ड टू वर्क मोर एंड लेबर सप्लाई विल शिफ्ट टू दी, मतलब ईच लेबर सप्लाई कर्व इज बेस्ड अपॉन अ गिवन टैक्स रेट. टैक्स रेट चेंज करेंगे तो भी लाइन शिफ्ट हो जाएगी, और अगर लेबर सप्लाई की लाइन शिफ्ट हो गई तो फुल एम्प्लॉयमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट चेंज हो गया तो आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो अब आपको इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट में सिर्फ ये बताना है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द आउटपुट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द आउटपुट. ठीक है, ये सब अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर ये टॉपिक इनकोड हो जाएंगे. मैं सिर्फ एक जगह यहाँ लिस्ट कर दे रहा हूँ टॉपिक में जो अभी एक्सप्लेन करना है. सो इन द सेम चैप्टर्स द नेक्स्ट विल बी what are the factors that affect output. एक टॉपिक ये रह जाएगा, दूसरा factors that do not affect output. ठीक है, factor that affect output and factor that do not affect output. ये दोनों ही चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि किस फैक्टर से आउटपुट चेंज होता है और किस फैक्टर की वजह से आउटपुट चेंज नहीं होगा. तो जो आउटपुट को चेंज करने वाले फैक्टर होंगे उसमें ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी होगी, कैपिटल होगा, जैसे इनकम टैक्स रेट हो गया वो फैक्टर हो जाएंगे, तो उनको इलाबोरेट करना है. और जिसकी वजह से आउटपुट चेंज नहीं होगा वो कौन से फैक्टर होंगे, जनरली जो नॉमिनल होंगे लाइक मनी सप्लाई. ठीक है, तो दोज फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द आउटपुट. ये पार्ट इससे आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 कंक्लूड होगा, एंड देन वी मूव टू चैप्टर नंबर 4 फॉर द रिमेनिंग पार्ट. तो क्लासिकल मॉडल में जस्ट क्लास को समराइज करके आप देख लीजिए. इसमें हमने इन दिस क्लासिकल मॉडल बेसिकली वी हैव टू एक्सप्लेन 3 थिंग्स. क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व, so now you know the position of classical aggregate supply curve. Subsequently में क्लासिकल एडी आएगा, फिर लोनेबल फंड आएगा, फिर हम पॉलिसी इम्प्लीकेशन की बात करेंगे, फिर आप कंप्लीट मॉडल को रिलेट करेंगे, ऑल टूल्स को एक साथ यूज कर लेंगे, ईएस को भी, एडी को भी, और लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी. बट इंटायर जब whenever you are reading any classical concept you have to follow this argument that entire classical model assumes that there is always, due to flexibility of wage, output is determined from the supply side. So it is basically a supply side economics that we are studying. It is a long run description of economy. Supply creates its own demand is a
at the core of supply side economics. Money perform the role of medium of exchange. Money is held only for transaction purpose. So any question related to the classical model whenever it comes, तो रिमेंबर यहाँ पे अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें सारे चैप्टर के कंसेप्ट इनकॉर्पोरेट करेंगे आंसर लिखते समय. तो ऑल कंसेप्ट रिलेटेड टू द क्लासिकल वो एक साथ आने चाहिए और कीवर्ड्स आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए. तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको भी लगता है जैसे क्वेश्चन हो गया इसको आप आंसर कर सकते हो. वैसे ही इकोनॉमिक सर्विस वाले क्वेश्चन दोनों को आप रेफर करो. क्लासिकल मॉडल विल आई थिंक नेक्स्ट 2 लेक्चर के अंदर और वो तीनों पार्ट जो है वो कवर हो जाएंगे. So then you can attempt all the classical model question. ठीक है. देन Keynesian मॉडल का डिस्क्रिप्शन ज़्यादा, इट विल टेक मच टाइम बिकॉज IAS कब होगा, LM कब होगा, उसके अंदर कंटेंट ज़्यादा है. विल प्रोसीड फ्रॉम दिस. ठीक है, टुमारो यहाँ से कंटिन्यू रहेगा.